680 कर रहे होते हैं हम लोग। ट्रू अबाउट नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, एक्टिव केस फाइंडिंग, डॉट्स अप्लाइड, ट्रीटमेंट फॉर स्मीयर पॉजिटिव केसेस। फोर्थ ऑप्शन बोल रहे हैं जनरल प्रैक्टिशनर आर रेस्ट्रिक्टेड टू गिव द ट्रीटमेंट। जनरल प्रैक्टिशनर can't give treatment, can't give treatment. Option 5 has replaced NTP. It has replaced NTP. NTP. तो फिर से देखिए, ट्रू अबाउट NTP, एक्टिव केस फाइंडिंग, डॉट्स अप्लाइड, ट्रीटमेंट फॉर स्मीयर पॉजिटिव केसेस, जनरल प्रैक्टिशनर कांट गिव ट्रीटमेंट, इट हैज रिप्लेस्ड NTP, एंड द राइट आंसर इज B and E. B and E. ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, इसका मतलब डॉट्स अप्लाइड किया जाता है और आजकल NTP न करके RNTCP चलाई जाती है। क्वेश्चन 681 देखेंगे। क्वेश्चन 681, ट्रू अबाउट ओरल पोलियो वैक्सीन। ट्रू अबाउट OPV क्या क्या होती है। ऑप्शन 1, पोलियो माइलाइटिस इन रेसिपिएंट, पोलियो माइलाइटिस इन रेसिपिएंट। Option 2, poliomyelitis in contact of recipient, poliomyelitis in contact of recipient. Option 3, Guillain-Barré syndrome. Option 4, vomiting and fever. True about oral polio vaccine, poliomyelitis in recipient, poliomyelitis in contact of recipient, Guillain-Barré syndrome, vomiting and fever. And the right answer is A and B. Poliomyelitis in recipient and poliomyelitis in contact of recipient. Question number 682 देखेंगे। क्वेश्चन 682 पूछा, ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स आर ऑल एक्सेप्ट। ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स आर ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन 1, डाइएल्ड्रिन। Option 2, Fenthion. Option 3, Diazinon. Option 4, Propoxur. Option 5, Linden. फिर देखिए, ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स आर ऑल एक्सेप्ट डाइएल्ड्रिन, फेंथियन, डायजिनॉन, प्रोपोक्सोर या लिंडेन। एंड द राइट आंसर इज A, D and E. डाइएल्ड्रिन, प्रोपोक्सोर, लिंडेन। क्वेश्चन 683 देखेंगे। क्वेश्चन 683, एंटी एरिथमिक ड्रग कॉजिंग टोर्सिडोज de Pointes are। एंटी एरिथमिक ड्रग कॉजिंग टोर्सिडोज de Pointes कौन सी है। ऑप्शन 1, क्विनिडीन। ऑप्शन 2, डाइसोपाइरामाइड। ऑप्शन 3, प्रोकेनामाइड। ऑप्शन 4, लीडोकेन। देखिए, एंटी एरिथमिक ड्रग कॉजिंग टोर्सिडोज de Pointes, क्विनिडीन, डाइसोपाइरामाइड, प्रोकेनामाइड, लीडोकेन। एंड द राइट आंसर इज A, B and C. क्विनिडीन, डाइसोपाइरामाइड एंड प्रोकेनामाइड। क्वेश्चन 684 देखेंगे। क्वेश्चन 684, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स आर। ऑप्शन 1, क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन 2, ईथर। ऑप्शन 3, नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑप्शन 4, हेलोथेन। ऑप्शन 5, इनफ्लूरेन। फिर देखिए, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स आर क्लोरोफॉर्म, ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोथेन या इनफ्लूरेन। द राइट आंसर इज A and D, दैट इज क्लोरोफॉर्म एंड हेलोथेन। क्वेश्चन 685 देखेंगे। क्वेश्चन 685 क्या पूछ रहे हैं, फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म इज इनहिबिटेड बाय। ऑप्शन 1, सल्फोनामाइड। Option 2, methotrexate.
methotrexate. Option 3 nitrous oxide. Option 4 trimethoprim. Option 5 5-flucytosine. 5-flucytosine. Folic acid metabolism inhibited by sulfonamide, methotrexate, nitrous oxide, trimethoprim, 5-flucytosine. And the right answer is A, B and D. A, B and D. Sulfonamide, methotrexate, trimethoprim. Question 686 देखेंगे. Question 686. Warfarin induced skin necrosis seen in. Warfarin induced skin necrosis seen in. Option 1 protein C deficiency. Option 2 protein S deficiency. Option 3 hemophilia. Option 4 antithrombin 3 deficiency. फिर देखिए वारफाइन इंड्यूस स्किन नेक्रोसिस सीन इन प्रोटीन सी डेफिशिएंसी, प्रोटीन एस डेफिशिएंसी, हीमोफिलिया, एंटीथ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी. दैट आंसर इज प्रोटीन सी डेफिशिएंसी. क्वेश्चन 687 देखेंगे. क्वेश्चन 687 क्या पूछ रहे हैं? बेस्ट ड्रग फॉर एनाइरोबिक इन्फेक्शन. बेस्ट ड्रग फॉर एनाइरोबिक इन्फेक्शन कौन सी होती है? ऑप्शन 1 मेट्रोनिडाजोल. ऑप्शन 2 इमीपेनेम. ऑप्शन 3 एस्ट्रोनम. ऑप्शन 4 क्लोट्रीमazole. ऑप्शन 5 वैनकोमाइसिन. बेस्ट ड्रग फॉर एनाइरोबिक इन्फेक्शन मेट्रोनिडाजोल, इमीपेनेम, एस्ट्रोनम, क्लोट्रीमazole, वैनकोमाइसिन. दैट आंसर इज मेट्रोनिडाजोल एंड इमीपेनेम. क्वेश्चन 688 देखेंगे. क्वेश्चन 688 एंटी कैंसर एंटीबायोटिक. कौन सी? ऑप्शन 1 वैनकोमाइसिन. ऑप्शन 2 एक्टिनोमाइसिन डी. ऑप्शन 3 ब्लियोमाइसिन. ऑप्शन 4 मिथ्रामाइसिन. एंटी कैंसर एंटीबायोटिक का वैनकोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन डी, ब्लियोमाइसिन, मिथ्रामाइसिन. दैट आंसर इज B, C and D. Actinomycin D, bleomycin and mithromycin. Anti-cancer antibiotics are actinomycin D, bleomycin and mithromycin. क्वेश्चन 689 देखेंगे. क्वेश्चन 689 क्या पूछ रहे? SSRI-R. ऑप्शन 1 citalopram. ऑप्शन 2 fluoxetine. ऑप्शन 3 mirtazapine. ऑप्शन 4 imipramine. ऑप्शन 5 sertraline. फिर से देखिए SSRI-R, citalopram, fluoxetine, mirtazapine, imipramine या sertraline. And the right answer is A, B and E. Citalopram, fluoxetine, sertraline. SSRI-R, citalopram, fluoxetine, sertraline. क्वेश्चन नंबर 690 देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 690 ट्रू अबाउट एस्मोलॉल. क्या? ऑप्शन 1 कार्डियोसिलेक्टिव. ऑप्शन 2 इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस. ऑप्शन 3 causes tachycardia. ऑप्शन 4 half life is 4 hours.
half life is 4 hour. Option 5 has no ionotropic activity. No ionotropic activity. True about esmolol. Cardioselective. Increased airway resistance causes tachycardia. Half-life is 4 hours. No ionotropic activity. And the right answer is A. It is cardioselective. It is cardioselective. Question 691 देखेंगे. True about esmolol. True about esmolol. दो क्वेश्चन एक ही टॉपिक पे आया है. Option 1 it is alpha blocker. Alpha blocker. Option 2 no intrinsic activity. No intrinsic activity. Option 3 has longer half-life. Longer half-life. Option 4 cardioselective. Cardioselective. Option 5 precipitate heart failure. Precipitate heart failure. Please देखिए true about esmolol. Alpha blocker, no intrinsic activity, longer half-life, cardioselective, precipitate heart failure. And the right answer is B, D and E. B, D and E. No intrinsic activity, cardioselective and precipitate heart failure. क्वेश्चन 692 देखेंगे. क्वेश्चन 692 क्या पूछ रहे हैं? True about dezosine. True about dezosine. क्या क्या? Option 1 slow acting morphine. Slow acting morphine. Option 2 low potent morphine. Low potent morphine. Low potent morphine. Option 3 act via GABA. Act via GABA. Option 4 doesn't increase histamine release. Don't increase histamine release. Option 5 increase plasma catecholamine. Increase plasma catecholamine. Increase plasma catecholamine. True about dezosine. Slow acting morphine, low potent morphine, act via GABA, don't increase histamine release, increase plasma catecholamine. Right answer is D. Doesn't increase histamine release. Doesn't increase histamine release. क्वेश्चन 693 देखेंगे. क्वेश्चन 693 क्या बोल रहे हैं? ट्रीटमेंट ऑफ कोरियोरेटिनाइटिस इन एड्स पेशेंट. ट्रीटमेंट ऑफ कोरियोरेटिनाइटिस इन एड्स पेशेंट. इन एड्स पेशेंट क्या क्या होती है? ऑप्शन 1 डाइडेनोसिन. ऑप्शन 1 डाइडेनोसिन. ऑप्शन 2 ज़ैलसिटाबिन. ऑप्शन 2 ज़ैलसिटाबिन. ऑप्शन 3 डैप्सोन. ऑप्शन 3 डैप्सोन. ऑप्शन 4 कोट्रीमोक्साजोल. ऑप्शन 4 कोट्रीमोक्साजोल. ऑप्शन 5 गैनसाइक्लोवीर. ऑप्शन 5 गैनसाइक्लोवीर. फिर ट्रीटमेंट ऑफ कोरियोरेटिनाइटिस इन एड्स पेशेंट. डाइडेनोसिन, ज़ैलसिटाबिन, डैप्सोन, कोट्रीमोक्साजोल, गैनसाइक्लोवीर. द राइट आंसर इज C, D and E. C, D and E. डैप्सोन, कोट्रीमोक्साजोल एंड गैनसाइक्लोवीर. क्वेश्चन 694 देखेंगे. क्वेश्चन 694 ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज. ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज क्या क्या है? ऑप्शन 1 लीवोडोपा. लीवोडोपा. ऑप्शन 2 मैजिंडोल. मैजिंडोल. ऑप्शन 3 ब्रोमोक्रिप्टीन. ब्रोमोक्रिप्टीन. ऑप्शन 4 एसाइक्लोवीर. एसाइक्लोवीर. ऑप्शन 5 बेनसेराजाइड. बेनसेराजाइड. फिर से देखिए ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज. लीवोडोपा, मैजिंडोल, ब्रोमोक्रिप्टीन, एसाइक्लोवीर, बेनसेराजाइड. राइट आंसर इज A, C and E. A, C and E. लीवोडोपा, ब्रोमोक्रिप्टीन एंड बेनसेराजाइड. क्वेश्चन 695 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 695 क्या पूछा है? ट्रू अबाउट विटामिन के. ट्रू अबाउट विटामिन के. ऑप्शन 1 इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ फैक्टर 2, 7, 9 and 10. इंक्रीज synthesis of factor 2, 7, 9 and 10. Option 2 doesn't require exposure to light. Don't require light exposure. Option 3
cause hemolytic anemia. Cause hemolytic anemia. Option 4, half-life is less than 6 hours. Half-life less than 6 hours. True about vitamin K. Increase synthesis of factor 2, 7, 9, 10. Don't require light exposure. Cause hemolytic anemia. Half-life is less than 6 hours. The right answer is A and C. The right answer is A and C. Increase synthesis of factor 2, 7, 9, 10 and cause hemolytic anemia.